ओके सो अगर हम ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज फाई आई इंसिडेंट वेव, और फाई स्कैटर्ड वेव, दैट इज ये इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट कर दें। वेयर इज देयर, ये चीज हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, दिस इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी फॉर फॉर द वेव फंक्शन, वो क्या हो जाएगी? सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ फाई आई एन सी ऑफ आर, क्या हो जाएगा? दैट वुड बी साई ऑफ आर, दैट वुड बी सम इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू फाई आई एन सी ऑफ आर। ये तो वो पार्ट है जो इंसिडेंट पार्ट है, और स्कैटर्ड पार्ट को भी अगर हम फाई से रिप्रेजेंट करें तो फाई एस सी उसको कह सकते हैं, एंड दिस इज आर। और ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये किसके बराबर थी? दिस वाज सम एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन द पार्ट विच इज ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर, या प्लस एफ ऑफ, हमने वहां पर जो फंक्शन लिया था दैट वाज एफ एफ ऑफ, सो एफ ऑफ थीटा कॉमा फाई, यानी एफ ऑफ ओमेगा ई टू द पावर आयोटा के आर अपॉन आर। दिस वाज दिस इक्वेशन। और अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं फॉर विद फाई इज इक्वल्स टू जीरो और के, सो विद फाई इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसके? एजीमुथल सिमेट्री की। सो साई ऑफ आर कॉमा थीटा जो आपके पास आ जाएगा, दैट वुड बी सम फंक्शन विच इज, तो इसके अंदर दोनों हिस्से होंगे। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ summation L is going from 0 to infinity, if you remember. So I to the power L, 2L uh, plus 1. Yeah, this was this. And then J L, this was the basal function K, KR, P L of cos of theta plus F of theta e to the power iota K R over R. So ये हमारे पास इक्वेशन है. So basically this is the equation which is this scattered wave function, uh, एंड दिस स्कैटर्ड वेव फंक्शन जो है वो एक तरह से हमने पहले रिप्रेजेंट किया, जिसमें हमने सिर्फ ई टू द पावर आयोटा के आर लिखा, एफ ऑफ थीटा, और यहाँ पर आप इस तरह से भी स्कैटर्ड वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो विच इज द स्कैटर्ड वेव फंक्शन. एंड ऑब्वियसली अब आपको इस स्कैटर्ड वेव फंक्शन के अंदर एफ ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी. सो लेट्स से वी फर्स्ट कंसिडर दैट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आर टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए दो हम केसेस करेंगे. uh, एक ऐसा r tends to infinity point where basically the scattering potential scatterer potential is almost equals to zero, and the other case we would consider that these scattering जो experiment के अंदर जो detectors हैं, they are located at distances from the target which are much larger than the size of the target itself. So दो केसेस हो जाएंगे. एक वो केस जिसके अंदर स्कैटरिंग पोटेंशियल वी ऑफ आर सिफर के बराबर है और इज मच लेस देन ई, एंड देन वी कैन कंसिडर इट और टेक इट एज जीरो. एंड दूसरा केस जो हो सकता है, या पहला केस जो हो सकता है, वो ये कि हम ये सोचें कि किसी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, ये ऐसे फासले पर लगे होते हैं जिनके साइजेस जो है is much larger, much small. In fact, the size is much larger, or the distance is much larger as compared to the size of the detector.
या एंड सो उस केस में जो ये बेसल फंक्शन होंगे जे एल ऑफ के ऑफ आर फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ आई, उसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू होगी व्हेन आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एंड सो दिस इज द केस जो हम करना चाहते हैं फॉर द वेव फंक्शन साई ऑफ आर कॉमा थीटा के लिए। या सो लेट्स से वी consider a case where r is tending towards infinity, yeah, and इस r tends to infinity में हमारे पास दो केसेस हो गए। एक को हम कहते हैं वन, एंड व्हाट इज वन, सिंस in in almost all experiments, all scattering experiments, डिटेक्टर, डिटेक्टर से मुराद ऑब्वियसली स्कैटर्ड वेव को आपने डिटेक्ट करना है, सो डिटेक्टर्स, detectors are located at distances from the target that are much larger than the size of the detector, than the size of the target itself. Yeah. So if this is the case, then there would be a limiting value for the Bessel function. So the limit of the Bessel function, JL of k r for large values, for large values of r, that is given by JL of k r is in fact given as sine of kr minus L pi by 2 whole divided by kr, and for r tending towards infinity. So the asymptotic solution जो है किसका, this is the asymptotic form. So this is the asymptotic form. So the asymptotic form वो कैसे लिखी जाएगी, is given by, कैसे लिख सकते हैं, you can write the asymptotic form as psi of r comma theta, which is equals to summation L is going from 0 to infinity, I to the power L, 2L plus 1, PL of cos theta times sine kr minus L pi by 2 whole divided by kr plus the scattered part, plus f of theta e to the power iota kr over r. So this is the scattered part. So this is the part. And now अगर मैं sin kr जो वैल्यू है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें ई टू द पावर आयोटा के आर की वैल्यू को, देन दैट वुड बिकम किसके बराबर, सो दिस साइन के आर
साइन के आर माइनस एल पाई बाय टू को कैसे भी लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो आपको मालूम है ना, साइन साइन थीटा बराबर होता है ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू आयोटा। हम इस तरह से लिखते हैं। सो हम इसको साइन के आर माइनस एल पाई बाय टू को उस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर थीटा जो है वो किसके बराबर है, इधर थीटा जो है वो बुनियादी तौर पर बराबर है किसके, के आर माइनस एल पाई बाय टू के बराबर है। सो दिस साइन साइन के आर माइनस एल पाई बाय टू जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी सम फंक्शन माइनस आयोटा की पावर एल ई टू द पावर आयोटा के आर माइनस आयोटा की पावर एल ई टू द पावर माइनस आयोटा के आर, और दिस होल डिवाइडेड बाय टू, टू आयोटा। और एंड ये हमने क्यों लिखा है, ये जो आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है माइनस आयोटा टू द पावर एल और आयोटा टू द पावर एल, दोनों टर्म्स के अंदर क्यों आ रहे हैं, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, बिकॉज ये इस वजह से, बिकॉज वी हैव ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा एल पाई बाय टू जो है, आयोटा एल पाई बाय टू इज इन फैक्ट इक्वल्स टू ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाय टू टाइम्स एल सुपरस्क्रिप्ट में। जो अंदर जाएगा तो फिर यही बन जाएगा, है ना, और अगर अंदर जाएगा फिर यही बन जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस वुड बी प्लस माइनस आयोटा टू द पावर एल, बिकॉज ई टू द पावर आयोटा पाई बाय टू, तो इसको उस फार्मूले में डालें, साइन के फार्मूले में यू कुड कैलकुलेट, और वो इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस आयोटा, और टू द पावर एल है तो ये टू द पावर एल बाहर रहेगा, सो दैट वुड बिकम टू द पावर एल, और इस वजह से एक आपके पास टर्म ये आ रही है और एक आपके पास टर्म ये आ रही है। ठीक है, सो दीज आर द टू टर्म्स, और देखें एल मौजूद नहीं है एक्सपोनेंशियल पार्ट के अंदर, तो इस वजह से हमने ये इस तरह से लिखा है। सो जो इक्वेशन है कौन सी वाली, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन अब इस साइन की सब्स्टिट्यूशन के बाद दैट वुड चेंज इनटू साइन ऑफ आर कॉमा थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा के आर ओवर टू iota k r after simplification summation over L is going from 0 to infinity, iota की power, so this is iota not L, so this is iota, so this is I to the power 2L into 2L plus 1 PL of cos of theta plus e to the power iota kr upon r कॉमन ले लें, तो अंदर जो ब्रैकेट में बचेगी टर्म्स दैट वुड बी एफ ऑफ थीटा द स्कैटर्ड पार्ट प्लस 1/2 iota k summation L is going from 0 to infinity, yeah, iota to the power L minus iota to the power L 2L 2L plus 1 PL of cos theta, PL cos theta, and this bracket close. Yeah. So this is the asymptotic form of the wave function when r is tending towards infinity. और इसमें हमने केस वन ये किया जिसमें हमने ये कंसिडर किया कि जो डिटेक्टर्स हैं दे आर लोकेटेड एट डिस्टेंसेस that are much larger than the size of the target itself, यानी size of the target. So this could be something, इस तरह से हम ये assume कर सकते हैं कि we have incoming radiation, this is the target, yeah,
and we have detectors. Uh, yeah, and this size, it is much smaller as compared to the distances at which these detectors are placed. So, in fact, detectors are at much larger distances than the size of the detector itself. And in that case, जो ये आपके पास spherical basal functions हैं JL, J sub L of KR, that would change into this function और आपके पास जो final wave function आएगा psi of, that is the asymptotic form जो है, this is the asymptotic totic form of psi of R, and this asymptotic form of psi of R जो है, this is basically this quantity, वो ये हो जाएगी, ठीक है. So this is one case. The other case जो है, the other case number two के अंदर again we will find some asymptotic form of phi, and इसको निकालने के लिए we need to determine the asymptotic form of the radial wave function RKL of R, and at large values of R, because initially we are considering that R tends to infinity, the scattered potential जो होगा वो एट लार्ज वैल्यूज ऑफ आर वो इफेक्टिवली सिफर के बराबर होगा. सो जो हमारी रेडियल वेव फंक्शन है, रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसमें वी ऑफ आर सिफर हो जाएगा. सो दूसरी बात क्या है, टू फाइंड द एसिम्प्टोटिक फॉर्म. एक सेकेंड जरा वेट कीजिए. ओके, सो जो एसिम्प्टोटिक फॉर्म है ऑफ द इक्वेशन, वो हम कैसे निकाल सकते हैं. वी नीड एट लार्ज डिस्टेंसेस ऑफ आर. सो टू फाइंड द cursor, to find the asymptotic form, one need first to determine the asymptotic form of the radial part of Schrödinger equation. Radial function RKL of R of Schrödinger equation. Yeah. So at large values क्या assumption होगा, at large values of R, यानी R tending towards infinity, जो scattering potential है, that can be taken as zero. So at large values of R, the scattering potential is effectively zero. Effectively zero. Yeah. So then the radial function क्या हो जाएगा, रेडियल इक्वेशन, जो रेडियल इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, वो क्या बन जाएगी, वी ऑफ आर सिफर होगा. सो वी ऑफ आर सिफर होगा का मतलब हो जाएगा कि वी वुड हैव d2/dr² प्लस k² of r, r k l of r equals to zero. So this would be the radial equation, yeah, of the Schrödinger equation. So the general solution is equation ka, that would be some linear combination of spherical basal
and Newman function. So we have another function जिसको हम न्यूमन फंक्शन कह रहे हैं. So the general solution of this radial equation is given by a linear combination by a linear combination of the basal spherical basal function and Newman function. या दूसरे लफ्जों में what we are saying here is that we are considering a region very far away from the scatterer where V is much less than E and the potential can be ignored. So जो जो asymptotic region है general solution का is that could be written for the radial part and the radial part जो है का solution would be something like as follows. So वो कुछ इस तरह के हो जाएगा. So what this whole अगर हम इस पूरी बात को आ, समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि a region is considered very far from the scatterer from the scatterer, i.e. V is much less than E. That is, uh, the scattering potential is less than the energy of the incident particle. So you could almost V of R को almost ignore कर दें that it is equals to zero. So इस सूरत में जो solution आपके पास आ रहा है R का वो क्या हो रहा है that would be R K L of R which is a linear combination of basal function and in fact the Newman function. So that is in fact A L some coefficient. JL is the basal function of KR plus BL and L of KR. So this is basically and K यहाँ पर आपको मालूम है वही है K बराबर है किसके K square is equals to 2ME over H bar square. So K square root ले लें तो वो आ जाएगा. अच्छा, now we can think that if there were no scattering, so अगर कोई scattering नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा. ये जो solution है that would also be valid for everywhere and in that case if there is no scattering including R tending towards infinity region as well, so इसके लिए ज़रूरी होगा कि BL को क्या हो जाना चाहिए सिफर हो जाना चाहिए. So यहाँ पर ये क्योंकि it's a linear combination then one could think about a situation when there is no scatterer, yeah. And for such a case, for this solution to be valid everywhere, including at r tends to infinity, one would require that BL को क्या हो जाना चाहिए सिफर हो जाना चाहिए. So यहाँ पर we note if there were no scat no scatterer for this solution to be valid everywhere, valid everywhere, क्या होना चाहिए that is valid everywhere including r tends to infinity, sorry, r tends to
जीरो, यानी आर टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब एट द स्कैटरर पोजीशन, बिकॉज देर इज नो स्कैटरर, तो इवन द सोल्यूशन विदाउट द स्कैटरर, ये सोल्यूशन वैलिड होना चाहिए। और इसको वैलिड होने के लिए हम क्या करेंगे कि बी एल को सिफर कर देंगे, ठीक है ना। सो नॉट ओनली एट आर टेंडिंग टू 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 इन्फिनिटी ऑन, बट ऑल्सो एट आर टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, इंक्लूडिंग दिस वन वुड रिक्वायर, क्या चीज हो जाएगा, वन वुड से, one would require फॉर द सोल्यूशन टू बी वैलिड, ये वाला सोल्यूशन टू बी वैलिड, बी एल को क्या होना चाहिए, बी एल इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज सम स्पेशल केस, यू नो, कि हम कोई अगर स्पेशल केस होगा जिसमें हम कह रहे हैं कि देर इज नो स्कैटरर, तो उस सूरत में अगर हमें ये सोल्यूशन, जो हमने सोल्यूशन लिखा है रेडियल वेव फंक्शन का, इसको अगर हम वैलिड मानते हैं, तो ये उसी सूरत में वैलिड हो सकता है जब बीएल को सिफर कर दिया जाए। तो ये एक स्पेशल केस समझ लें, यानी सोल्यूशन की वैलिडिटी के बारे में हम बुनियादी तौर पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सोल्यूशन इज वैलिड। देयरफॉर अगर, अब दूसरी बात कर लें, अब हम अपने अपने केस की बात कर लें जहां पर पोटेंशियल है मौजूद वगैरह वगैरह। तो therefore in the presence of v which is not equals to zero, that is in the presence of v जो कि सिफर नहीं है, then the coefficient bl जो होगा वो सिफर नहीं होगा, and that coefficient which is not equals to zero, that would contain the information about the scattering process, yeah. So इसका मकसद ये हो गया कि ए एल जो है वो इंसिडेंट पार्ट का कोफिशिएंट है, बी एल जो है स्कैटर्ड पार्ट का कोफिशिएंट है। इसका मतलब है कि इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट स्कैटरिंग थ्योरी, हमें बुनियादी तौर पर डिटरमिन करना चाहिए रेशो बी एल अपॉन ए एल, एंड दिस रेशो बी एल अपॉन ए एल जो है दैट वुड टेल अस अबाउट द स्कैटरिंग इफेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम एन एनर्जी, दैट इज बिकॉज ए एल एंड बी एल, इनके सब स्क्रिप्ट में एल लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर पार्शियल वेव एनालिसिस के बाद बात करें। सो दीज वुड बी different ratios, one ratio specific for one value of angular momentum, second b ratio would be specific to second angular momentum value, and so on, yeah. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सोल्यूशन है, therefore therefore wait please, ओके, सॉरी, ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये सोल्यूशन को वैलिड मान रहे हैं, तो देन नॉट ओनली दिस सोल्यूशन इज वैलिड इन द एब्सेंस ऑफ अ स्कैटरर at any point r is tending to infinity or r is equals to zero, but this obviously this is solution written for in fact some scatterer, then this is also valid in the presence of the potential v is not equals to zero. So उस सूरत में v is not equals to zero, जो ये coefficients हैं bl, that would contain information about the scattering process. Therefore in the presence of potential, i.e. v not zero, yeah, the coefficients bl is not zero,
ठीक है, and this BL not zero then contain information about the scattering, about the about this rather scattering नहीं scatterer, about the scatterer, about the scatterer का मतलब है जिससे scattering हो रही है, because what we are interested in the scatterer, yeah. So BL not equals to zero का मतलब है कि that would contain information about the scatterer. So what is in fact determined, जो deterministic चीज है इसके अंदर, in fact one will be interested in determining the ratio, the ratio BL upon AL, BL upon AL, and this ratio BL upon AL, which tells the scattering effect of effect at a particular angular momentum and energy. Yeah, so it will give us scattering at a particular angular momentum and energy. Yeah, so this is in fact what we are interested in. And if you are interested in such a solution, then that would be basically some solution which is a valid solution and will give us some information. Now, let's say we consider a case of free particle. Uh, a- and when we say we consider case of a particle, then the case without scattering center, and see what is expected, and the result that will be obtained will be compared with the scattering potential. So, uh, uh, free particle means no scattered, and then a particle in the presence of a scattering, in the presence of a scatterer. उन दोनों solutions को compare करने पर जो हमारा result आएगा, that would give us some information about this ratio BL upon AL. Yeah. So पहले एक फ्री वेव फंक्शन के लिए सोल्यूशन लिखते हैं और फिर उसके बाद उसको हम कंपेयर करेंगे. तो हमने कहा लेट्स से एक सब हेडिंग डालते हैं, फ्री पार्टिकल. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री पार्टिकल? So let's say we say consider the case without scattering center. That is no scattering center, and see what is expected. Expected. Then the result obtained will be compared will be compared uh, when there is a scattering potential. When there is scattering potential. Yeah, so no scattering potential and scattering potential. So सबसे पहले free function, free wave function. So free wave function would be wave function जो कि किसके बराबर हो जाएगा, RL
आर ऑफ आर यानी के या के एल हमने लिखा है आर ऑफ आर विच इज इक्वल्स टू जे एल ऑफ के आर जे एल ऑफ के आर सो यू कैन ऑलवेज सो हम इस जो इमेजिनरी पार्ट है ना, यानी हम इस जे एल ऑफ आर को हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस की फॉर्म में लिखा जा सकता है. वी कैन डू बोथ द केसेस, दैट इज वी कैन ईदर represent this JL or the basal spherical basal function in terms of sine or in terms of cos. In terms of cos अगर हम लिखते हैं तो that has an advantage that वो आयोटा नहीं मिलेगा आपको डिनोमिनेटर में जब आप उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की सूरत में लिखेंगे. एंड that is sometimes that is good because then you are talking about some free particle and that is some real part of some function containing no imaginary part. इस वजह से हम उसको cos की सूरत में लिखना ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्बत साइन. So but in each case the solution would give you the same result. It is just a matter of representation, yeah, कि आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. But in each case अगर आयोटा आयत आता भी है तो फिर हम क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटीज एंड देन फ्रॉम प्रोबेबिलिटीज वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फ्लक्स. सो वो आयोटा खुद ब खुद सिफर हो आयोटा खुद ब खुद आयोटा मल्टीप्लाइड बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा दैट वुड गिव यू सम वैल्यू विच इज पॉजिटिव डेफिनेट वैल्यू. या सो दैट इज इन फैक्ट नॉट अ प्रॉब्लम. बट कहने का मकसद ये है कि जो स्फेरिकल बेसल फंक्शंस हैं they can be represented in terms of sine and cos, and the only difference in between sine representation and cos representation is a phase factor. So there would be some difference in the phase factor, whereas no other difference in terms of representation. So you can always write in terms of sine and cos. And now since we are talking about द स्कैटर्ड पार्ट, तो लेट्स से मैं उसको कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, दैट इज द बेसल फंक्शंस को. या